So in last class, what we have done a glimpse of this particular classical scattering, and we just derived the formula of differential scattering cross section. And once we derive the formula of differential scattering cross section, then we can easily find what is total scattering cross section. And this is where we are just using the classical analog of scattering. But today we are just going to start the quantum mechanical analog. But the formulation of quantum mechanical scattering is just from the classical scattering. The whole idea is all the calculating the differential scattering cross section. But here method is a little bit different. So today I will just go for bond approximation because it is very important for your exam. And tomorrow I will go for the complete theory of scattering. So I have just deliberately make a trick. First we will go for exam part, and then we will go for understanding the complete physics and all this thing. Okay, and that is also partial wave analysis and concept of phase shift. We will do it tomorrow, but today we will just go for bond approximation. What is this particular thing? So we have basically some point of potential, some source of potential, and this is my initial line. And what will happen? A particle will come and it will go like this, and this angle is basically a scattering angle. And we know classically we can just find this angle is equal to this angle, but in quantum mechanics the thing is little bit different. But the theory is exactly same. So initially the particle is a free particle and it is just a plane wave. So what will happen? It is just a plane wave. So initially the particle is coming just like as a plane wave. And we all know that it is coming in z direction. So I can put that value is some a e to the power I kz is my incoming wave at very far away from this potential. So this is short range potential in general, we can assuming. So this is at the very far away. This is just coming as a plane wave. Now, what will happen when it is just going to interact with this potential? When it is just going to interact with this potential, this plane wave will transform itself as a spherical wave. So what will happen? This will come here, it will interact it, and it will just go like a spherical wave. And so why, if we want to write the complete solution for Schrodinger wave equation, when we are going to solve it, that will be something like A, and that will be some amplitude, and the incoming wave, the superposition of incoming wave, because it will be always there, it will be come here and it will make a thus all particular interaction with this potential, plus after the scattering at the very far away from this, we are finding the spherical wave. And this is spherical wave is e to the power I kr upon r. But here there is one more term, and this term is f theta. And this f theta is very beautifully identified as form factor. And this f theta will depend on which type of potential is there and how this particular wave is going to interact with this potential. And this f theta is actually responsible to find the differential scattering cross section. So if in the quantum mechanics, the differential scattering cross section can be identified as the mod value of f theta square. So the whole challenge is how we are calculating this particular f theta. I am not going into detail of the derivation, because from the derivation we can easily define that differential scattering cross section is equivalent to f theta, and this is something f theta by r is something amplitude of this e to the power I kr. Okay, so this is your spherical wave, and there are some amplitude that will be function of theta, and theta is nothing but the scattering angle. So here
this is my d theta, and we can easily calculate the differential scattering cross section. So there are different provision that you can make. You can calculate the value of f theta. The whole challenge here is that finding the value of f theta. As in the classical mechanics, the main challenge is that how we are finding the b as a function of theta. But here, what we have to do, we have to find how this f is a function of theta. This is the real challenge, and we have to just go for this particular thing. So there are n number of theories that will tell you the story how to calculate f theta. But two very nice approximation, and this is one sort of Taylor expansion, nothing else. So I have given this all derivation in your study material, so you can just go for this after the exam. Before the examination, there is no need to go for the all derivation. Okay, just you have to remember the basic formula. So according to Bond approximation and using the concept of Taylor expansion, we have a definition, we have a formula of basically f theta. So what is this formula? The formula is f theta is equal to minus m upon 2 pi h cat square integration Vr d cube r. So why I am given it vector here? यहाँ पर मैं vector क्यों दे रहा हूं? इसका क्या मतलब है? What is meaning of vector here? Potential is always a scalar quantity, but I am giving this notation. What is meaning of that? Anyone? Sir, we are integrating potential at a particular point from origin. We are taking the all possible value r, theta, and phi. Okay. If I am giving the vector sign, that means you are calculating for the whole space. If we are talking about only r, then you are just going for the distance. Are you getting my point? So here your potential may be function of r theta, but this formula is basically for the low energy. This formula is basically for the low energy, but this formula will reduce to something like minus 2m h cat square q r vr sin qr dr, where q is equal to 2k sin theta by 2, and where theta is the scattering angle. So you have to very much careful about this particular formula. This q is 2k sin theta by 2. If your scattering angle is 2 theta, then this value is equal to 2k sin theta. So you have to always take care of this thing. Okay. And what is k? The k is your famous root under 2m e upon h cat square, which is very famously known as wave vector. So, and this formula is for a spherical symmetric system. And this is for a spherical symmetric system for even high energy. This is deliberately for the low energy part. This is deliberately for the low energy part. But if you are going for the high energy, you can only calculate for the spherical symmetric system, and that will be this particular formula. Okay. So these two formula you have to always remember. So this is f theta for the low energy, and this is f theta phi for the high energy part. You can easily calculate this thing. You have to always take care of this particular value of q. So it's a very simple. How you can derive it, that is different issue. But the thing is that from here we can easily calculate f theta. Once you will calculate f theta, you can easily calculate d theta. So once you will calculate d theta, अंदर क्या लिखा है? क्या हो गया? इंटीग्रेशन के अंदर क्या लिखा है? VR से पहले r ये नजर नहीं आ रहा है क्या? दिखाई नहीं दे रहा है क्या आपको? r vr sin qr dr. Okay.
क्लियर है? Yes, sir. Okay, ठीक है. R VR sin QR DR. Okay, so you have to use this formula. So now let's directly go to some problem based on this bond approximation. Okay, so आज की क्लास में हम लोग different types of problems को करेंगे. Okay, चलो. So first we will do some problem for low energy, then we will go for what? High energy and a spherical symmetric system too. Okay, so let's try to go for this. सो एग्जाम में क्या दिया हुआ रहेगा? एग्जाम में आपको जस्ट पोटेंशियल दिया हुआ रहेगा और फिर आपको ये दोनों फॉर्मूला का यूज करके डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन या टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन पूछा जाएगा. दैट्स इट. और 5 मार्क्स आपके हाथ में रहेंगे. सो प्लीज इसे छोड़िएगा मत, जरूर करके जाइएगा. ठीक है. सो लेट्स ट्राई टू गो फॉर वन प्रॉब्लम हियर एंड दिस इज गिवन बाय. So your potential is, this is some sort of soft sphere. VR is equal to V naught, where R is less than A and is equal to 0 otherwise. So this is your soft sphere. Okay. So what we have to do, we have to find d theta and sigma for low energy. So what is my formula for F theta? So formula for F theta is equal to what? Minus m upon 2 pi h cut square, and here we have to go for VR d cube r, and this value is minus m upon 2 pi h cut square. You have a very small, this is constant here, so it is very simple problem, but ये भी एग्जाम में आ चुका है. That is very beautiful thing. This is your V, and now you have to go for d cube r. What is meaning of d cube r? R square sin theta dr d theta d phi, and you have to go for triple integral 0 to pi, 0 to 2 pi, and 0 to a, because otherwise it is potential is 0. So you have this particular value minus m 2 pi h cube, and you can easily, in this sin theta d phi is 4 pi, and v naught will be outside. You have to go for 0 to a r square dr, and once you will calculate this particular thing, this value thing is basically minus m upon 2 pi h cut cube 4 pi v naught a cube by 3, isn't it? So this value is equal to 2 pi will be cancel out. So this is minus 2m v naught upon h cube a cube by 3. So this is your form factor f theta. And now you can calculate the differential scattering cross section. The differential scattering cross section d theta is mod f theta whole square, and this value is equal to 4 m square v naught square a to the power 6, and that value is 9 h cut 6. Okay, so this is your differential scattering cross section, which is constant. Okay, now you can easily calculate your total scattering cross section. So how you will calculate total scattering cross section? Sigma is equal to d theta sin theta d theta d phi. So when you will calculate it, the term 4 pi will introduce into this particular calculation, and what you will get, so you can use this space. So this integration is basically, just a minute. So this integration is, so this thing will be constant, so 4 pi will come outside. So you have 4 m square v naught square a to the power 6 9 h cube 6 into 4 pi. That's it. So this is your answer. This is your sigma. So एग्जाम में क्या आया था?
एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि इफ यू विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ आर a to 2a, then how your total scattering cross section is going to change by keeping your mass same, v naught same. So what will happen? A to the power a की जगह पर क्या आ जाएगा? 2a to the power 6, isn't it? So this will be 2a to the power 6. So 2 to the power 6 time it is just going to increase. So this type of problem is coming in your exam. Okay, straightforward, simple problem. Clear है ये? इससे आसान क्वेश्चन होगा क्या कुछ? बताइए. कुछ बोलते ही नहीं हो. हाँ, चलो, let's try to go for next problem. So here your potential is very interesting, and this potential is given by VR is given by summation over V naught a cube r minus ri cap. R minus ri cap del function, delta. That is what? Dirac delta function. And what is ri? Ri is the coordinate of position vector of ri is position vector of corner of cube. Corner of cube, and the center is, and the origin is at the center of cube, and origin is at center of cube. So what you have to do? You have to find the total scattering cross section. You have to just find total scattering cross section. So which type of problem is there? So you have a cube, something like this. Okay, so sorry. So here is your center. At the center you have, so you have 8 corners are there, है ना? And this is your Ri is that particular coordinate of that particular corner. So how you will approach this particular problem? So when you will see this is your x, y, and z axis. So let's say this is x axis, y axis, and this is your z axis. So if you can see this particular thing, that at the all corners you have a Dirac delta function. You have a Dirac delta function at all 8 corners, something like this, because this is summation over I. So what you have to do? And you have to calculate it, the total scattering cross section for low energy. So you have to calculate it for low energy. So how you have to go for it? Obviously, you have formula. What is this formula? Minus m upon 2 pi h cut square, and this value is f theta, VR d cube r. And now, if you will see, which coordinate system is the best for cubical system? Cubical के लिए कौन सा coordinate system better होगा? Cartesian. Cartesian coordinate system. So what I can do, I can write this whole thing as a Cartesian coordinate system. अगर मैं Cartesian coordinate system इसे लिखूंगा तो d cube r क्या हो जाएगा? dx dy dz. And what will happen to this one? What will happen to this one? Dirac delta का function क्या हो जाएगा? बताइए. So this thing can be written as, I can take v naught a cube outside. So this thing can be taken as delta x minus xi, delta y minus yi,
and delta z minus zi, and you have dx, dy, and dz. And you have here triple integration. All value are going from minus infinity to plus infinity. And how much time you have to just go for this particular integration? कितनी बार ये इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको? How much time you have to go for this integration? 8 times. 8 times. Very good. Because you have to integrate for each and every corner. 8 times. So what will happen to one integration? Dx will come to this, dy will come to do this, dz will come to this. What will happen to one particular integration? बताओ. What will happen to one particular integration? क्या होगा? Suppose मैं x की बात कर रहा हूं, so delta x minus xi into dx. What will happen? Minus infinity to plus infinity. P by 2. What will be that integration? This is very interesting. अगर डिराक डेल्टा को आप इंटीग्रेट करते हो, del x minus xi dx minus infinity to plus infinity, where xi is between minus infinity to plus infinity. What will be this value? 1. Exactly. So that value is 1. So every integration will give you 1. So how much time you will get 1? 8 times. 8 times. So you will get first integration for first corner, second corner, third corner, fourth corner, fifth corner, sixth corner, seventh, and eighth corner. And this will be your value. So you have minus 8m v naught a cube upon 2 pi h cut square. So this value is 4. So here your f theta is minus 4m v naught a cube upon pi h cut square. So this is your f theta. Now once you have calculated f theta, now you have to go for d theta. What is your d theta? इसका mod square कर लो, है ना? So your d theta is equal to mod of f theta square, and this value is equal to 16m v naught a cube upon pi h cut, sorry, pi square h cut 4. This is m square v naught square, है ना? So this is your d theta. Now what will be your sigma? You have to go for d theta, sine theta, d theta, d phi, and d theta is just a constant value. So you will multiply with 4 pi. So you have 64. 1 pi will cancel. So this will be m square v naught square. So there is a to the power 6 actually. A to the power 6 and pi h4. So this will be your total scattering cross section. Very simple question, very simple, conceptual, but it has 5 marks question once it come into exam. So what is the idea? Idea is just understanding the symmetry of cube. And please mind it, this is just given in a vector form. So you can easily convert it into your own form. Okay, own suitable form. You can convert it into Cartesian, you can convert it into cylindrical, you can convert it into spherical polar. So we all know that cube is one of the beautiful system where you can solve it in a Cartesian coordinate system. So what we have done, we have just changed each and everything into Cartesian coordinate system. Because there is d cube r. So why this thing is given in term of vector? Okay, this thing is given in term of vector. So you have to take all the coordinate system and you can easily go for your suitable coordinate system and then you can easily solve it. So this is wonderful problem came into your exam. Let's try to go for another problem, and now we will go for a very famous problem, that is Yukawa potential. And you all know that Yukawa potential can be reduced to your Coulomb potential, and you will surprise
that will give you exactly the same answer, whatever we have get in our last class. That is all about your Rutherford scattering. Okay, so let's try to go for Yukawa potential. यहाँ तक clear है ना? Everyone? Yes, sir. Okay, good. So what is Yukawa potential? So VR is equal to beta e to the power minus alpha r by r. So for alpha is equal to 0, this will be something like your B can be replaced by K. So this can be something like your Coulomb potential, isn't it? अगर अल्फा की वैल्यू 0 कर दूं तो Coulomb potential जैसा है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. एंड दिस इज वेरी फास्ट डिकेइंग पोटेंशियल. न्यूक्लियस में आपने न्यूक्लियर फिजिक्स में आपने इसे पढ़ा होगा, है ना? They are short range potential, strong potential. So we have to find the differential scattering cross section for high energy. Now, for the high energy, what is my F theta? बताइए क्या है F theta? Minus 2m h cat square q, that is r VR sin QR dr, and we have to go for all possible value of r. यही फॉर्मूला है ना? जस्ट टेल मी, चेक करो ठीक लिखा हूं, ठीक है ना? ओके. नाउ व्हाट इज माय पोटेंशियल? सो माय पोटेंशियल इज माइनस, this is constant value, so we will use it later. So here is r, I can write VR is equal to, so I can put beta outside, e to the power minus alpha r by r, and this is sin QR dr, and you have to go for 0 to infinity. So we have to solve this integration. This is very interesting. And how you will solve it? Fortunately, this r will cancel, so it will be little bit easier problem, है ना? So let's try to solve this particular integration. This value is minus 2m beta upon h cat square cube. कैसे solve करोगे इसे? sin QR को क्या लिखोगे? e raised to power I QR minus e raised to the power minus I QR by 2i into dr, and you have to go for 0 to infinity. Yes, कैलकुलेशन बहुत स्मार्टली करना है, कहीं गलती से यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मत लगाने लगना. ओके, सो नाउ लेट्स ट्राई टू गो फॉर दिस इंटीग्रेशन. ऐसा इंटीग्रेशन तो हम लोगों ने कई बार कर रखा है, इजंट इट? पूरे पर्टर्वेशन में ऐसा इंटीग्रेशन किया था. लॉट ऑफ प्लेसेस वी हैव डन दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन. सो वी हैव minus 2m beta upon h cat square cube, and this integration is 0 to infinity. So we have two integration, 0 to infinity. I can take e to the power minus r common, and this value is alpha minus iq, and 2i is also outside, so we have taken 2i here. And what will be next one? Minus 0 to infinity e to the power minus r, so this will be alpha plus I cube, and this dr is also there, dr. Okay, so let's try to solve this. So now you can easily use gamma integral, है ना? So this is simple, this is simpler, so you can easily go for gamma integral. So किसी का अनम्यूट किया हुआ है, जरा अपना चेक कर लो, है ना? बार बार कोई मैसेज का साइन म्यूजिक आ रहा है, ठीक है? So this value is minus 2m beta 2i h square cube,
What will be this integration? बताइए क्या होगा ये इंटीग्रेशन? 1 अपॉन अल्फा माइनस आई क्यू माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस आई क्यूब। ठीक है ना? सो ठीक है ये? Okay. So what will be this value? 2m beta 2i h cut square cube. So here alpha plus I cube minus alpha minus I cube by alpha square plus q square. So what will happen? This alpha will cancel out and this value is equal to minus 2m beta 2i h cut square cube, and here 2i cube by alpha square q square. So 2i cube will cancel, and this value is minus 2m beta h cut square, and here we are getting 1 upon alpha square q square. Okay. एक बार जरा चेक करो किसकी आवाज आ रही है यार, मेरे कान में बार बार वो मैसेज का आवाज आ रहा है। इट इज वेरी इरिटेटिंग, है ना? बिकॉज मुझे कंसंट्रेट करना पड़ रहा है कैलकुलेशन के ऊपर ना, बार बार मैसेज का आवाज आ रहा है। सो प्लीज आप मैसेज अपना ऑफ करो, किसी का ओपन है तो, या फिर म्यूट करके रखो, है ना? सर ऑल आर अनम्यूट। क्या है? सर किसी का नहीं अनम्यूट। किसी का अनम्यूट नहीं है? तो फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? मेरे में तो नहीं आना चाहिए। तो चलो देखता हूं। चलो, so this value is equal to your f theta. Now you have calculated f theta. Now you have to go for what? You have to go for differential scattering cross section. So what will your differential scattering cross section? D theta is equal to 4 m square beta square h cut 4 1 upon alpha square q to the power square. So this is your differential scattering cross section, and you can check, you can easily check that when alpha is equal to 0, this will be exactly to the equal to your Rutherford scattering. Why? Because what is value of q? q की वैल्यू क्या है? 2k sin theta by 2, isn't it? You can easily check it. देखो, आप इसको easily check कर सकते हो that this value is equal to 4 m square beta square h cut to the power 4. Beta can be replaced by k, and here you have q to the power 4 if alpha is equal to 0. And what is your q? 4 m square beta square h cut 4. So there is 1 upon 4 2k. So 2k square, है ना? क्या था? What is value of q? 2k sin theta by 2. Sorry, है ना? यही था, isn't it? So you have q to the power 4. So that value is equal to 16k square or k to the power 4 sin to the power 4 theta by 2. And यहाँ पर आपको एनर्जी मिल जाएगी, isn't it? Here you will get the value of energy. So now you can have differential scattering cross section is inversely proportional to sigma to the power 4 theta by 2. कल की क्लास में किया था ना ये? Yes, sir. है ना? And just put the value of k is equal to 2m e upon h cut square root under. So अगर k4 आएगा, that means this is inversely proportional to e square. So कल हम लोगों ने किया था d theta is inversely proportional to
1 upon sine square, sorry, sine to the power 4 theta by 2, and d theta is proportional to 1 upon e square. ये दोनों ही आपको मिल रहा है. So this is very wonderful thing that it can easily translate into your this Rutherford scattering. But this expression have came in your exam at least 4 to 5 times, this particular expression. Not 1 to 2 times, 4 to 5 times it is coming into your exam. In different exam also. Even in the NET exam, you will see that every 2 exam, they will just give you this type of problem. Okay, let's go for one more problem. सर बताओ. का जो टोटल होगा, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जो होगा, उसके लिए फिर ये कांस्टेंट तो नहीं होगा ना, जब जैसे हम 4 पाई मतलब साइन मतलब थीटा. अरे इसके बाद इसको इंटीग्रेट करोगे भाई, साइन थीटा डी फाई. ओके, मतलब ये वही क्या? मैंने पूछा, लाइक जो ये थीटा है स्कैटरिंग एंगल, तो दैट वुड बी फंक्शन ऑफ, मतलब दैट वुड बी वेरिएबल लाइक ना, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और क्या. फंक्शन ऑफ थीटा. अरे ये तो किया ही कल की क्लास में, किया नहीं क्या ऐसा? यस. तो जब ये कांस्टेंट हो जाए तो फिर आप सीधा 4 पाई से मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन अगर ये Yes. कांस्टेंट नहीं है तो 4 पाई से सीधा थोड़ी मल्टीप्लाई करोगे. यस. यू हैव टू गो फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा. कल यही तो सिखाया था. व्हाट इज Yes. टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, व्हाट इज डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन. इट विल जस्ट टेल यू थीटा, बड़ा वाला थीटा जिसके बारे में बात कर रहे हैं, दैट थीटा टू डी थीटा. तो उसके लिए आपने डिफरेंशियल का यूज किया, लेकिन सारे पॉसिबल वैल्यू के लिए यूज करोगे तो क्या होगा? सॉलिड एंगल की कल बात की थी. यस सर. तो सॉलिड एंगल के लिए से तो इंटीग्रेट कर रहे हैं, साइन थीटा डी फाई. यस. है ना. ये दूसरी बात है कि ये इंटीग्रेशन बहुत टफ हो जाएगा यहाँ पर, इसी Yes. कारण कोई उसकी बात नहीं करता है, उसको हम कंप्यूटर से यूज करते हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर. यस. है ना. यहाँ पर 1 अपॉन साइन क्यूब थीटा बाई 2 साइन, तो एक साइन, सॉरी, यहाँ थीटा बाई 2 है तो ऊपर वाले को 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 करोगे और फिर उसे आप करके कैलकुलेट करोगे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस. है ना. सो ये गलती मत कर देना कि कहीं भी 4 पाई से इंटीग्रेट कर दिया. नहीं सर, वही चीज वो तो मुझे पता चल रही थी कि क्यू फंक्शन ऑफ थीटा बाय 2 है. बिल्कुल. तो क्यों? दैट, अरे क्यूब इज अ फंक्शन ऑफ थीटा बाई 2, तो पूरा साइन यही तो आ जाएगा ना. हाँ जी सर. हाँ जी तो सर. हाँ जी. ठीक इसमें है क्या सर. है? तो ये कांस्टेंट थोड़ी है ये. हाँ जी सर. ये तो तरीका है लिखने का ना, क्योंकि इतना लंबा एक्सप्रेशन कभी हम थोड़ी लिखते हैं. यस सर. यस. ठीक है, ये हमेशा है। दिमाग में रखिएगा. चलो एक और प्रॉब्लम करते हैं. ठीक है. देखो ये प्रॉब्लम है, आपके एग्जाम में आया था. वी आर इज इक्वल टू के बाई आर स्क्वायर. बहुत मजेदार प्रॉब्लम है. एंड फॉर हाई एनर्जी के लिए आपको डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की वैल्यू निकालनी है. ठीक है. सो बताओ डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन के लिए क्या होगा? माइनस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर क्यूब, और यहां पर 2 थीटा इज योर स्कैटरिंग एंगल. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? स्कैटरिंग एंगल क्या है? 2 थीटा है. सो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी जरा बताओ? व्हाट इज क्यू? 2 के साइन थीटा. वेरी गुड, 2 के साइन थीटा. और ये थीटा स्कैटरिंग एंगल ही है. ओके, हम डिफरेंशियल में तो थीटा रहेगा ही रहेगा ना, जब टोटल करोगे तो थीटा गायब होगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो अब इसे जब आप ले जाओगे, सो दिस इज व्हाट आर वी आर साइन क्यूब आर डी आर, 0 टू इंफिनिटी, माइनस 2m एच कट स्क्वायर क्यूब, 0 टू इंफिनिटी आर के बाई आर स्क्वायर साइन क्यूब आर डी आर, and this value is equal to minus 2m h cut square cube
and you have, this is very interesting, 0 to infinity sin QR by R dr. हालांकि एग्जाम में तो इतना नहीं दिया था, एग्जाम में उन्होंने जस्ट बोला था कि डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन क्यू पर कैसे डिपेंडेंट है, बट वी विल ऑल्सो ट्राई टू प्रूव इट, ट्राई टू कैलकुलेट इट कंप्लीटली. सो अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, जरा देखें. मैथमेटिकल फिजिक्स का कैसे यूज करोगे, और आपकी कॉपी में है ये भी मुझे पता है. कैसे सॉल्व करोगे इसको, एनीवन? बताओ कैसे सॉल्व करोगे. इंटीग्रेशन बाय पार्ट से. कुछ नहीं बोलोगे है ना. सो फर्स्ट व्हाट यू विल डू, यू विल मेक इट डायमेंशनलेस. सो जब आप इसे डायमेंशनलेस बनाओगे तो क्या होगा, जस्ट पुट क्यू आर इज इक्वल टू टी, देन आर इज इक्वल टू टी अपॉन क्यू, डी आर इज इक्वल टू डी टी अपॉन क्यू. एंड नाउ यू विल गो फॉर दिस इंटीग्रेशन -2m k अपॉन h स्क्वायर क्यू. एंड आप देखोगे अंदर वाला चीज क्या हो गया, साइन टी बाई आर की वैल्यू टी अपॉन क्यू, क्यू बाहर आ गया, एंड दिस वैल्यू इज डी टी. और डी टी की जगह पर भी क्या हो जाएगा, सो डी आर की जगह पर डी टी बाई क्यू, सो एक क्यू बाहर आ गया, एंड दिस वैल्यू इज 0 टू इंफिनिटी. सो व्हाट विल हैपन, नाउ दिस इज योर इंडिपेंडेंट ऑफ क्यूब, तो आपका काम तो हो गया. बट बाय द वे अगर कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेना हो तो क्या होगा, साइन टी बाई टी डी टी 0 टू इंफिनिटी, क्या होगा इसकी वैल्यू इंटीग्रेशन की, और कैसे करोगे इसे. बताओ, पिटाई लगेगी तेज है ना. कंटूर इंटीग्रेशन. कंटूर इंटीग्रेशन, वेरी गुड वेरी गुड. यू नो साइन एक्स बाई एक्स, आलोक सर ने करवाया होगा. -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, जाके देखो अपनी कॉपी में. चल रहा है सर अभी चल रहा है तो क्या कंटूर इंटीग्रेशन करवाया नहीं है, ये इंटीग्रेशन नहीं हुआ है साइन एक्स बाई एक्स. यस सर कल ही हुआ है. अजब हाल है यार, मतलब मुझसे तो हवाबाजी मत करो, ठीक है. ये इंटीग्रेशन नहीं करवाने का कोई मतलब ही नहीं है. क्या होता है, व्हाट विल हैपन, साइन एक्स बाई एक्स 0 टू इंफिनिटी, कल ही करवाया तो बताओ क्या होता है. आप इस गलत फहमी में मत रहना कि दूसरी जगह क्या हो रहा है दूसरे टीचर को नहीं पता है, और खास करके मैथमेटिकल फिजिक्स की तो एक एक चीज हमें पता रहती है. व्हाट विल हैपन, 0 टू इंफिनिटी साइन एक्स बाई एक्स, सर ने ये करवाया होगा है ना. पाई बाई 2, ओके. Just go and do this thing. So this value is equal to f theta is basically -2mk h cut square 1 upon q, and this will be pi by 2. Okay, you can just check it. And then what is your differential scattering cross section? Differential scattering cross section is mod f theta square, and this value is equal to m square k square h cut to the power 4 1 upon cube, and pi square is also. So this is q square. So what is your q square? Q square की वैल्यू क्या है यहां पर, pi square m square. This is your k square h cut to square. What is your q? That is 2me upon h cut to square sine square theta.
So 1m will cancel. This h cut square, this h cut square is cancel. So differential scattering cross section is inversely proportional to E and directly proportional to sin square. Sorry, inversely proportional to sin square theta. है ना? और अगर आपको टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन लेना होगा तो आपको किसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा? 1/sin स्क्वायर थीटा डी थीटा 0 to पाई डी फाई 0 to 2 पाई sin थीटा डी थीटा, है ना? तो 1/sin थीटा बचेगा. यू रिमेंबर दिस थिंग? जैसे अभी कंफ्यूजन हुआ था ना. सो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन में ये सारा चीज तो बाहर आ जाएगा. जब आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या इंटीग्रेट करोगे? 1/sin square theta. Let's say all constant is equal to alpha. So this is 1/sin square theta. Here you have sin 2 theta. Always remember, because scattering angle is, sorry, we are taking the solid angle. So that is sin theta d theta d phi. So this is your value. So now you have to calculate it. So 1/sin theta is cosec theta. So cosec theta का integration आपको करना होगा. What is integration of cosec theta? What is integration of cosec theta? That will something log cosec theta plus cot theta या minus cot theta के term में आता है. Just try to do this all thing. Okay. Anyway, so this is all this type of question will come into your exam. So mainly आपको differential scattering cross section ही आएगा. अगर total scattering cross section आएगा तो उसको आपको complete integration करना होगा. Okay. So this is very important. मैं आपको एक homework दे रहा हूं और इसे आप करके रखोगे. सर हाँ बताओ क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा, दिस थीटा इज द स्कैटरिंग एंगल ना, नीचे वाला. तो ये थीटा हमारा वो क्या यार, इस समय से तुम परेशान क्यों हो? अरे सर ये मतलब क्या है? सर साइन थीटा हमने थीटा स्मॉल थीटा लिया था ना. ये अरे स्मॉल थीटा नहीं है भाई, वो स्मॉल थीटा आप तो पूरा का पूरा पोलर एंगल हो गया ना. यस. आप दो तरह की कैलकुलेशन कर रहे हो, एक स्फेरिकल पोलर में कर रहे हो चीजें. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर. और ये स्फेरिकल पोलर की सारी चीजें हैं. आर यू गेटिंग दिस थिंग? कैपिटल थीटा की जो बात कर रहे हैं. और जो स्मॉल थीटा था वो आप सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम के लिए यूज कर रहे थे. आर यू गेटिंग? आप क्लियर हो इससे या नहीं क्लियर हो? भाई एक ही जगह पर हम दो तरह के कैलकुलेशन नहीं कर सकते क्या? जस्ट वांट टू कंफर्म बिकॉज मेरी कॉपी में शायद मैंने गलत लिखा. सर ये जो सिग्मा है उसमें जो थीटा हम साइन थीटा लिखते हैं वो कैपिटल थीटा है ना. साइन थीटा कैपिटल थीटा है लेकिन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट का ही तो कैपिटल थीटा है. अरे कैपिटल थीटा लो, जाई लो, काई लो, उससे आप क्यों परेशान हो? लेकिन वो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट का ही तो कैपिटल थीटा है भाई. ओके सर. और वो जो स्मॉल थीटा है वो पोलर का स्मॉल थीटा है जो प्लेन में जो कैलकुलेशन करते हैं. ओके सर. भाई एक जगह पर दो तरह का थीटा नहीं ले सकते क्या? आप थीटा लैंग्वेज पर जो मैं बोल रहा हूं उस थीटा को समझ रहे हो? भाई एक जगह पर मैंने ये थीटा ले लिया, ये पार्टिकल आ रहा है, यहां पर एक स्फेरिकल पोलर है, यहां पर मैं जो ले रहा हूं एक मैंने जेड एक्सिस इसके ले लिया जिससे कि मैं एक थीटा ले रहा हूं यहां पर, इसको मैं कैपिटल थीटा कर रहा हूं. ये एक स्फेरिकल सेल नहीं बना सकता क्या? बताओ. ये एक स्फेरिकल सेल बना सकता है कि नहीं बना सकता है? यस. बना सकता है. तो इसका सॉलिड एंगल कितना होगा? साइन थीटा डी 2 पाई साइन थीटा डी थीटा. यही तो होगा. आर गेटिंग माय पॉइंट? अब मैं आपको कहूं कि मैं यहां भी एक पोलर एंगल लेना चाहता हूं और इसको मैं इसके साथ थीटा कह रहा हूं, तो ये थीटा दोनों सेम हो जाएगा क्या?
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसको मैं थीटा कह रहा हूं, तो जरूरी है कि ये थीटा दोनों सेम हो जाए? नहीं सर। भाई ये थीटा से कैलकुलेशन करके हमें इसी थीटा में तो आ गए थे कल की क्लास में। ओके सर। आप देखो कल की क्लास में जो हमने कैलकुलेशन किया था उसमें क्या किया था, स्मॉल वाले थीटा को लिया था ना, स्मॉल वाले थीटा से कैलकुलेशन करके कैपिटल थीटा में तो आ गए थे। ये जो हमने लिखा था L बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, यहां पर हमने क्या प्रूफ किया था, r टेंस टू इंफिनिटी, ये छोटा वाला थीटा इज इक्वल टू अल्फा, यही तो प्रूफ किया था। और ये अल्फा की वैल्यू फिर क्या होगी, पाई बाई 2 माइनस बड़ा वाला थीटा, यही तो लिखा था नहीं? क्लियर सर, हो गया क्लियर। क्लियर हो गया? क्लियर, यस। गुड। ये तुम्हारी कंफ्यूजन नहीं है, हर एक बच्चे कंफ्यूज होते हैं। डोंट कंफ्यूज इनटू लैंग्वेज, सी मैथमेटिक्स। आप सपोज करो मैं ऐसे लिखूं, देखो थोड़ा दिमाग ओपन करो, साइन जाई डी जाई डी ईटा, वेयर जाई इज इक्वल टू 0 टू पाई एंड ईटा इज इक्वल टू 2 पाई। अब ये स्फेरिकल पोलर नहीं है क्या? बताओ, नहीं है क्या? यस। है ना? तो इस जाई से क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं भाई? मेरी इच्छा मैं इसे जाई ले लूं, मेरी इच्छा मैं इसे थीटा 1 ले लूं, इसे थीटा 2 ले लूं। अब थीटा 1 पूरा का पूरा कैलकुलेट होगा, 0 टू पाई जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब तो क्लियर हो गया। आप ले कुछ भी सकते हो, बट वो तो पूरा का पूरा आपको स्फेरिकल सिमेट्री को ही तो दे रहा है। ये भी स्फेरिकल सिमेट्री दे रहा है, ये भी स्फेरिकल सिमेट्री दे रहा है, ठीक है? ये भी जा रहा है, यहां पर थीटा कहां से कहां जा रहा है, 0 टू अल्फा, है ना? और ये थीटा कहां से कहां जा रहा है, 0 टू पाई। क्लियर है ये? थोड़ा सोचो, अगर फिर कंफ्यूजन होगा तो फिर पूछना, डोंट वरी। आपका दिमाग ओपन करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है? चलो, सो एक मैं आपको होमवर्क देता हूं, आप उसे करके रखोगे, ठीक है? आप प्लीज इसे सेंड करना, देखते हैं कैसे करते हो। सो वी आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर e to the power minus alpha r. So this is, so and v naught is also there. Okay, so find the differential scattering cross section when q tends to infinity. Find the differential scattering cross section q tends to infinity. So पहले क्या करोगे आप, पूरा का पूरा कैलकुलेट करोगे, और फिर q tends to infinity पर क्या होगा वो आप कैलकुलेट करो, ठीक है? So this is your homework. चलो, so आज के लिए इतना ही, कल हम लोग इसको फाइनलाइज करेंगे, ठीक है? सर बताओ। फॉर लो एनर्जी और हाई एनर्जी। अब Q टेंस टू इन्फिनिटी का क्या मतलब है? यस, हाई एनर्जी। ठीक, चलो, थैंक यू।